हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विथ एयर कॉलम इन अ पाइप। सो लेट अस सी हियर। देखिए राइट, एक पाइप दिया है। ओके ओके, सो दिस इज योर ओपन एंड। ओके, and this is in resonance with air column in a pipe. If the tuning fork is moved with speed of 2 meter per second in front of the open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. तो देखिए राइट, इनिशियली पाइप जो है ऐसे रखा है और ट्यूनिंग फॉर्क लेट्स सपोज यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे सो लेट अस अज्यूम कि उस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ऐसा मान लेते हैं दिस इज द फंडामेंटल मोड में है, राइट। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट। लेट अस अज्यूम यहाँ पे लेंथ जो है L1 है, तो एफ इज इक्वल टू, आई एम अज्यूमिंग दिस इज इन फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो F1 विल बी V अपॉन 4L1, ओके, वेयर V इज द स्पीड ऑफ साउंड। ओके ओके नाउ ओके, अब इसके बाद ये बोल रहा है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जा रहा है इन फ्रंट ऑफ द ओपन एंड, राइट, एंड पैरेलल टू इट। सो लेट अस अज्यूम, कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है इस तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब न्यू रेजोनेंस आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट लग जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो सोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू द एयर मूव कर रहा है। सो लेट अस ट्राई द डॉपलर इफेक्ट नाउ। ओके, सो दिस वाज बिफोर, दिस वाज व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क वाज एट रेस्ट। ठीक है, जब ट्यूनिंग फर्स्ट रेस्ट में था तब जो है फ्रीक्वेंसी V अपॉन 4L थी। अब मैं केस ले रहा हूं व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क इज मूविंग। देखिए, जब ट्यूनिंग फॉर्क मूव कर रहा है तो इसका डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे तो नया फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। सो लेट अस अज्यूम द न्यू फ्रीक्वेंसी इज F2 एज ऑब्जर्व्ड बाय द एयर इन द पाइप। So F2, and what is the initial frequency of tuning fork was F1. Okay, so this will be F1, or you can say that this is the frequency of the source F1, and with the same frequency the pipe is resonating. So F1 is equal to V upon 4L1, assuming that the pipe is resonating with fundamental mode of frequency. So V upon 4L1, length is L1, right? So F1 that will become, right, now I can say here the speed of sound is how much, it is given in the question. See, the speed of sound is 320, so it will become here 320 plus the speed of observer. So observer is the pipe, so it will become at rest, so 0 divided by 320, right. Since it is moving closer, so I can say here minus will be there, and since it is moving closer, so 2 meter per second will be positive, so this minus 2. So how much you are getting, F2 is equal to F1 into 320 upon 318. Okay, now I can take here this side. Okay, now I can say here F2 is equal to this. So let us see here, F1 is how much, see, V upon 4L1, okay, into 320 upon 318. Okay, now see F2, now this is the new frequency after Doppler effect. So with this frequency, once again let us assume this is it resonating with length L2. So F2 will become V upon 4L2, and that is equal to V upon 4L1 upon 320 upon 318, because this is the new frequency, right. See, right, this is the new frequency F2 as observed by the pipe, and now with this frequency once again it is resonating. So let us assume the pipe has to get the length L2 to resonate with the new frequency. So that length I have taken L2, right, and once again I am assuming that the pipe is resonating with fundamental frequency. So V upon 4L2, right, F2 will become, so now you can see here this V will get cancelled out and this will get cancelled out. So from here I can say L1 upon L2 is equal to 320 upon 318.
So this I got here. So let us call this is equation 1. Now it is saying the smallest value of percentage change required in the length of the pipe. So how much change, or we can say like the change in length. So delta L upon L into 100. This I have to find. So I can say here delta L will be how much? See, this becomes L2 minus L1 upon L into 100. This I need to find out. So C, right, or L1, right, initial. So this becomes L2 minus L1, L2 upon L1 minus 1 into 100. Okay, now you see here the L1 upon L2 is this one. So L2 upon L1 will become 318 upon 320 minus 1 into 100. Okay, if I take this above here, so this will become how much? See, minus, okay, so right, once again, right, this you can take, so minus 2 upon 320 into 100, right. So this will become, see how much, this will get cancelled out, okay, and this becomes, okay, so this will get cancelled out and this is becoming minus 20, or you can say like minus 10 upon 16%. Alright, so approximately this will become 5 upon 8. So see here, you can get 5 upon 8. So 0. So approximately we will get here minus 0.62%. Answer, right. So you can see here the length, right, minus is indicating that the length will decrease and the change will be minus 0.62%. Okay students, I hope you understood this question.